हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलफ्रिक वीडियोस वंस अगेन। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया टू यूएस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बॉस्टन। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोगों का फ़्लाइट है। टर्मिनल 3 इज़ द इंटरनेशनल टर्मिनल, प्लस यहाँ से कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस भी फ्लाई करता है। सो हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 3 में, which is undoubtedly the best airport in India, and if you compare this with many leading airports in the world, this is going to be one of the best in the world as well. So we have now completed our check-in and now going inside the international departure area. So ये एंट्री है एक तरह से सिक्योरिटी चेक के बाद। जब हम लोग अंदर जाते हैं तो दोनों साइड में शॉप्स हैं। मोस्टली ये ड्यूटी फ्री, लिकर, टोबैको एंड वेरियस अदर थिंग्स के शॉप्स शुरू में ही हैं। सो दिस इज़ द वे टू द मेन एरिया जहाँ पर टिपिकल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैंग आउट एंड देयर आर रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट, लाउंज एक्सेट्रा। सो अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर सारे गेट्स एक ही तरफ है। सो दिस एरिया एनीवन कमिंग टू द एयरपोर्ट हैज़ टू कवर। इसके बाद ये जो शॉपिंग एरिया है, इसके बाद हम लोग जाएंगे लाउंज में। सो वी हैव लाइक 2 to 3 hours almost to spend before we catch our flight. So that time we will be spending in lounge and have some light dinner, of course, because again dinner will be served in the aeroplane, but mostly to visit the lounge, to make a vlog and kill the time. We will be going to the lounge. So again, this is the entire shopping area is still continuing, and the New Delhi Airport Terminal 3 has a huge shopping area with different kinds of brands, different kinds of things available. अब हम लोग आ गए हैं लाउंज में। This is Encalm Lounge and this is a new lounge that has opened in Delhi. हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले में आए हैं and they have their lounge in the domestic terminal also. Now this is the way to check in into the lounge. So you present your credit card. This is a self check-in, although I did not see anyone using this. So यहाँ पर if you present your credit card, the machine can tell you whether you have a complimentary access or not, or do you have to pay for the lounge access or not. Many credit cards have complimentary access. I'll list them down in the description box. So हम लोगों ने यहाँ पर use किया था हम लोगों का स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड and HDFC Regalia card, but there are other cards which also work here. So this is the main check-in area. There are people queued to check in, and they have representative in the entrance, so they will take your credit card, verify whether it is complimentary or not. Agar nahi hai, people can give the charge and still go inside. So both the things work. And then of course they have a time limit of around 2 hours, but typically that's not very strongly enforced. So once you are inside, you have like plenty of time to spend. And so what I was telling earlier is that this is a new lounge. ये मैंने पहले नहीं देखा था। Plaza Premium Lounge used to be the default lounge, जिसका ब्लॉग हमने पहले भी किया था, उसका लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Now this lounge is much bigger than Plaza Premium Lounge to start with. यहाँ पर जो seating capacity है that's like 200 plus. So this is a very big lounge. You can see मैं अलग अलग साइड से ट्राई कर रहा हूँ व्यू लेने का, to just show you how spread out the lounge is, what different kind of seating arrangement they have. They have this dining area, they have this casual sitting area, and there are like sofas as well for more comfortable seating. So different kind of seating है। पीछे long sofa भी है reclining, although those were occupied. So it's a busy time now, mostly since this is late evening and dinner time. So जो भी टाइम होगा उस हिसाब से फूड सर्व होता है, बफे फूड होता है।
अभी मैंने पहले ले लिया है चाट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ चार्ट दैट यू हैव टू मेक. सो ममिता ने एक चार्ट का बना दिया है जिसमें देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ कोर्स. सो चार्ट काउंटर से यू कैन आस्क देम टू प्रिपेयर इट फॉर यू और यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन, क्योंकि चार्ट मेरा बहुत ही फेवरेट है और जब मैं यूएस जाऊंगा तो आई वोंट बी एबल टू गेट इट सो फ्रिक्वेंटली, ऑल्दो ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है. सो मैं इंडिया छोड़ने के पहले एक बार लास्ट चाट का मज़ा ले रहा हूँ. एंड देन वी विल मूव टू द बफे बिकॉज दे हैव बफे डिनर एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट काउंटर्स. हम लोग एक एक करके जाएंगे, देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है फूड. सो अगेन यू कैन सी द एंटायर लाउंज इज़ बिजी एंड this is the salad counter, salad and starter counter, you can say. So there are different kind of condiments, there are different kind of starters like sprouts and all. Then there are salad of course, so yogurt, different kind of chutney, hummus, etc. are there. So this is the starting thing, and there are other things that will follow like the main buffet area and all. कुछ कट फ्रूट्स भी रखा हुआ है. सो बेसिकली अ मिक्स्ड काउंटर टाइप का है. एंड ऑफ कोर्स these are all सेल्फ सर्व. एंड जो इनके मेन काउंटर्स हैं उसमें देयर आर, दिस इज स्वीट कॉर्न सूप. मेन काउंटर्स में दे हैव पीपल टू हेल्प टेक द फूड, दे सर्व द फूड. एंड इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, मैन पावर काफ़ी है इनके पास. सो आई वॉज सीइंग कॉन्स्टेंटली पीपल आर मूविंग अराउंड, क्लीनिंग द टेबल्स, serving the guests, and housekeeping was very good. And another thing is that lounge में separate washroom भी होता है. So when people are here for quite some time they can use the washroom also, which is different from the regular airport washroom. This is the main buffet counter जहाँ पर there is a spread of mostly Indian food along with some continental things like pasta and all. Again, this is something new that they are serving hot chapati, which is not very common in lounge. Mostly they serve rice every time, but the chapati is kind of, you need to have the supply line constantly filling the chapatis. So but they have it. So again, these are all Indian items: dal, chicken, rice, paneer. This is the चाट काउंटर. यहीं से चाट बना के ले गई थी मोमिता, बट यहाँ से यू कैन आस्क देम ऑल्सो टू हेल्प यू, सो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर और एटलीस्ट कैन हेल्प यू चूज़ व्हाट यू नीड. सो ये आ गया है फूड. कौशिकी ने फूड ले लिया है अपना. सो अगेन वी आर हैविंग लाइट डिनर बिकॉज अगेन हम लोग प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पर डिनर होगा. सो वी आर जस्ट हैविंग अ लेट इवनिंग डिनर, लाइट डिनर. सो अगेन राइस, पनीर, dal, these are chicken, and these are the things that soup, these are the things that we want to have, and not have a very heavy dinner at this point because बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फ्लाइट में. but quality of their food is very good, and mostly जो food है that's everything is hot and of course freshly prepared. ये मैंने ले लिया है अपना खाना. And again I have chosen mostly the same things like chicken, paneer, dal, rice, little bit of pasta, and little bit of a palak curry, which is palak matar if I remember correctly. Now so after food, of course there is a dessert counter, as like in every Indian buffet there is a substantial dessert counter, and this place is no exception. So to start with, they have this rava kesari, which is basically a dish, sweet dish made out of suji. Then they have this burfi kind of thing, red velvet cake. Then there is some bakery cake kind of thing, and of course there is firni. So these are more or less the dessert items being offered, so which is a decent enough collection. Not very huge, but good enough for
a lounge where people are constantly coming and going and not really. So it's quite filling, basically, quite filling. And so this is my plate. Momita was taking firni also. I took this. This is my dessert, and with this we will kind of mainly conclude our conclude our dinner. But at the end, of course, this is the bar. So this is paid. This is not included in the entry. So this is paid. If someone wants to have a drink or two, he can take here by paying. Now this is another interesting counter, which is the masala chai counter, and here a guy is really making tea in the Indian style, and serving tea, freshly made tea, not the machine made tea. It's a freshly made tea which he is serving. So मैं यहाँ पहुँच गया कि लास्ट में एक चाय हो जाए खाने के बाद. सो ये देखिए जैसे उबल रहा है टी चूल्हे में. सो फ्रेश बना के दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड sugar later, but again this is masala tea, so which has a spicy aroma. So ये चाय पीने के बाद हम लोग अपना इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे. एंड इसके बाद हम लोगों का जर्नी स्टार्ट होगा. आई मीन जर्नी हैज़ स्टार्टेड बट द फ्लाइट जर्नी विल स्टार्ट. उसका हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे. एनकम लाउंज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर बताइएगा. इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड सी यू अगेन इन आवर अपकमिंग वीडियो वेयर वी विल फीचर आवर जर्नी टू यूएस एंड अनदर लाउंज विजिट इन दुबई. तब तक के लिए गुड बाय.